The topic of discussion is reaction kinetics, and the subtopics are rate determining step and finding order of reaction. Let's look into the details of rate determining step. All reactions occur in single or a series of steps. If a reaction occurs in several steps, one of the steps is the slowest. The rate of this step determines the overall rate of reaction. This lowest step is called the rate determining step. अगर एक रिएक्शन सेवरल स्टेप्स में प्रोसीड करता है तो उसमें से एक स्टेप जो होगा वो स्लोएस्ट होगा. दैट विल डिटरमाइन द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन और उस स्लोएस्ट स्टेप को हम रीडिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं क्योंकि वो रेट डिटरमिन कर रहा होता है. लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल. कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन in which NO2 combines with CO to form NO plus CO2. The rate equation for the reaction is rate equals to K NO2 twice. This equation shows that the rate of reaction is independent of the concentration of CO. क्योंकि rate expression में सिर्फ NO2 appear हो रहा है. In other words, it tells us that reaction involves more than one steps. Let's see the details of that reaction. Two molecules of NO2 are involved in the rate determining step. So mechanism of reaction is following. NO combines with NO2 to form NO3 plus NO. और ये जो step है ये slow step है. Next, NO3 combines with CO to form NO2 plus CO2. So यहाँ पे जो NO2 के molecules हैं वो twice times appear हो रहे हैं. लेकिन जो NO3 है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में अपेयर नहीं हो रहा था. सो NO2 जो बन रहा है वो बन ही स्लो स्टेप पर है. दैट्स वाई हम उसको जनरल इक्वेशन में रिप्रेजेंट नहीं करते. द फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप एंड NO3 विच डजंट अपेयर इज रिएक्शन इंटरमीडिएट. क्योंकि NO3 जो है वो केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन में अपेयर नहीं हो रही. दैट्स वाई वो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो कि बहुत शॉर्ट लिव्ड स्पीशी होती है. Let's see what is reaction intermediate. The reaction intermediate has a temporary existence. It is unstable relative to the reactants and to the products. It's a species with normal bonds and may be stable enough to be isolated under special conditions. So reaction intermediate has a temporary existence. It is unstable relative to the reactants and to the products, but we can isolate it with normal bonds under special conditions. We have previously defined order of reaction as the sum of exponents of the concentration terms in the rate expression of that reaction. Here we will see about the methods of determination of order of reaction. It can be determined by the following methods: hit and trial method, graphical method, differential method, half-life method, and method of large excess. Let's see in detail what the half-life method is. Half-life of a reaction is inversely proportional to the initial concentration of reactants raised to the power 1 less than the order of reaction. So we got a equation. Half-life of any order of reaction is inversely proportional to concentration, that is A. Next, raised to the power 1 less than the order of reaction. So order of reaction we have n, 1 power less than, so उस order of reaction में से हम 1 minus कर देंगे. Let's derive an equation for half-life method. Let us perform a reaction twice by taking two different initial concentrations A1 and A2. Half-life periods are found to be T1 and T2. So equation we have T1 is directly proportional to
A1 into n-1। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन थी वो A1 थी। प्रीवियस एक्सप्रेशन ही हमने रिपीट किया, बस यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह हमने A1 पुट कर दिया। और फॉर सेकंड वी हैव T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर A2 n-1। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन थी वो A2 थी। डिवाइडिंग द टू रिलेशंस वी विल गेट दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करने से जो इक्वेशन हमें मिलेगी दैट वुड बी T1 over T2 equals to A2 over A1 raised to power n-1। Taking log on both sides, हमने log अप्लाई किया, so n-1 इट्स अ log रूल कि जो पावर है वो log से पहले आ जाएगी और log जो है वो A2 over A1 के साथ अप्लाई हो जाएगा। So जब हम लोग इक्वेशंस को रीअरेंज करेंगे we will get n equals to 1 plus log T1 over T2 divided by log A2 over A1। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें टाइम दिया हो और कंसंट्रेशंस दी हुई हो। टाइम से मुराद हाफ लाइफ्स दी हुई हो और कंसंट्रेशंस दी हुई हो, सो वी कैन फाइंड ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। So if we know the two initial concentrations and two half-life values, we can calculate the order of reaction by putting values in the previous expression. Here we have a practice MCQ. The half-life time for first-order decomposition of a substance dissolved in CCl4 is 2.5 hours at 30 degrees Celsius. The amount of substance left after 10 hours if the initial weight of the substance is 160 gram. We have to find amount of substance left after 10 hours. And the options are 5 gram, 10 gram, 15 gram, 20 gram. And the correct option is 10 grams. The next method is method of large excess. In this method, one of the reactants is taken in a very small amount as compared to the rest of the reactants. The active masses of the substance in large excess remain constant throughout. The substance taken in small amount controls the rate and the order of reaction is noted with respect to that. So it is because small change in concentration taken in small amount affect the rate appreciably. बहुत सिंपल प्रिंसिपल है इस मेथड का। इफ वी हैव टू रिएक्टेंट्स तो एक रिएक्टेंट को हम स्मॉल अमाउंट में लेंगे, दूसरे रिएक्टेंट को हम लार्ज अमाउंट एक्सेस में लेंगे। सो जो लार्ज एक्सेस में होगा वो ना तो रेट ऑफ इक्वेशन को अफेक्ट करेगा ना ही वो ऑर्डर को अफेक्ट करेगा। सो जितना चेंज उस स्मॉल अमाउंट में आएगा दूसरे रिएक्टेंट की, उससे हम रेट और ऑर्डर दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि रिएक्टेंट ऑलरेडी स्मॉल कंसंट्रेशन में था, उसकी कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस आएगा दैट विल अफेक्ट द रेट अप्रिशिएबली, और जो हमारे पास एक्सेस में है वो वैसे ही रेट को अफेक्ट नहीं करेगा। For example, the hydrolysis of ethyl acetate. In this way, the reaction is repeated by taking rest of the substances in small amounts one by one and overall order is calculated. So इस तरह से हम रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उन सबको बारी बारी स्मॉल अमाउंट्स में लेते हैं और ओवरऑल जो ऑर्डर है उसे कैलकुलेट कर देते हैं। So this was all about the lecture. I hope you have understood it well and thank you so much.